Okay, students, so let us look at this question. In triangle ABC, altitudes AD and BE are drawn to the corresponding bases. If angle BAC is equal to 45 degrees and angle ABC is equal to theta, then AD upon BE equals to. Now, students, if you look at the options, they are given in terms of sine x and cos x. So there is a small correction here. ये angle ABC theta नहीं है, it is equal to x. Right, now let's solve this question. Triangle बना लेते हैं यार ABC. Two altitudes. So let's say this is AD. This is, let's say, BE. Let's name them A, B, C, AD and BE are the altitudes. Angle BAC is equal to 45 degrees. ये पूरा angle यार 45 degrees है. And angle ABC is equal to x. This complete angle is x. We are looking for AD by BE. अब देखिए यार क्या क्या चीजें हम फिगर आउट कर सकते हैं. इफ यू लुक एट द ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में हमें दो एंगल पता है 45 और 90. तो ऑब्वियसली यार ये तीसरा एंगल आ जाए, राइट. दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्रीज बिकॉज किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम इज 180 डिग्रीज. नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज ए बी ई we know the angles are 45, 45, 90. That means it is an isosceles right angle triangle. और isosceles triangle है तो दो sides बराबर हो जाएंगी. We can say that AE and BE will be equal, right? तो मैंने क्या किया, AE और BE दोनों को एक वेरिएबल मान लिया. Let's say they are equal to y. So AE is equal to y, BE is also equal to y. Now can I say AE is y, BE is y, so we can find AB as well. We know that 45, 45, 90 triangle angles के सामने का रेशियो होता है 1:1:√2. So AB students, AB I can say will be √2 times y. I hope this point is clear to everyone. क्योंकि अगर ये y है, ये y है, हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, उससे भी √2y आ जाएगा AB का वैल्यू. Now, students, we are looking for AD by BE. Okay. Now, just see here, students. We know that BE is equal to y, है ना? BE मैंने निकाल लिया है y. I mean मैंने assume किया है BE को y. अगर मैं AD को भी निकाल लूँ y के terms में, I'll get my answer, right? If I can find AD in terms of y, I'll get the answer. Now look at this triangle ABD. देखिए ABD triangle में ABD is a right angle triangle. उसमें ये वाला एंगल x है, राइट. वी हैव टू यूज x बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ x. तो अगर मुझे ये x को यूज करना है और यहाँ पर अगर मैं साइन ऑफ x फाइंड करूं, साइन ऑफ x, नाउ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन ऑफ x विल बी AD अपॉन AB, राइट. साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू AD अपॉन AB. And students, AB we know is √2y, right? AB we know is √2y. From here, students, I can say that AD will be equal to √2y into sine of x. And mind you, we are looking for AD by BE. BE we know is y. And AD we know is √2y into sine x. तो यार अगर मैं AD upon BE को calculate करूं, AD upon BE if I calculate, AD I know is √2y into sine of x, and BE we assumed it to be y. You can see y gets cancelled, and finally the required answer is √2 sine x. Option D is the correct answer.